Hey friends, this is Trupti from our career classes. Today in this video series, we'll learn chapter 8 trigonometry from the unit 5 trigonometry. In this unit we have the two chapters trigonometry and the applications of trigonometry, and the both chapter consist of total 12 marks. So it's very important unit guys. So let's check out this unit. This video, first the table of content, that means this video contains the history of the trigonometry, introductions, the t ratio, the short form of the trigonometry, t ratios. Last 2 points are main, the heart of this trigonometry, values of t ratios for some specific angles, and trigonometric identities. Now last but not the least, trigonometric identities. One more thing is in this chapter, but this year the CBSE board is deleted the portion that there is the complementary angles, so we are not considering in this video. So guys, let's check out. First is a history. History is very important for us, a proud moment for the Indians. A Greek astronomer, geographer and the mathematician Hipparchus discovered the concept of trigonometry. But the modern sign convention is first attested by in the Surya Siddhanta, and its properties were further documented by the 5th century Indian mathematician and the astronomer Aryabhatta. So this is very good sign, and sign known as the Aryabhatta named the sign as the Jya or Jiva, we can say Jiva, Jiva, and cos as a Kotijya, that means Kotjya. Laterly, they known as a cos and sine. When they are converted in the some languages, so they are probably known as a cos and sine. The trigonometry basic, the meaning of this trigonometry is the trigonometry consists trignon and metron. So what is the trignon plus metron? So trignon, the basic mean is triangle and metron means measure. So it consists trigonometry. Again, if we divide the trignon also, so tri, that means 3, and gonon means the sides. So 3 sides measurement, it gives you the trigonometry. And trigonometry is used in various things. Trigonometry, triangle, metron is a branch of the mathematics that studies the relationship between the sides, lengths and angles of triangles. It is also helpful to measure the height of the mountain, find the distance of the long rivers, etc. One of the most important real life applications of trigonometry is in the calculation of height and distance. That means अगर कोई कार जा रही है और कोई बिल्डिंग पे खड़ा इंसान ऊपर से उसको देख रहा है, तो उससे उसकी आंख से और कार का एंगल जो है जमीन से कितना बन रहा है, एंगल कितना है, डिस्टेंस कितना है, वो आप फाइंड कर सकते हो. अगर कोई जमीन पे इंसान खड़ा है और वो एरोप्लेन को देख रहा है, तो उससे आई साइड से उसका एंगल कितना बन रहा है. सो दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, कि हम रियल लाइफ में एग्जांपल्स में कहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं. सम पीपल आस्क दैट ट्रिग्नोमेट्री जैसा वर्ड तो हम लोग बाद में कभी यूज नहीं करते, बट इट्स नॉट लाइक दैट. ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी यूजफुल. Some of the sectors where the concepts of the trigonometry are extensively used are aviation department, as I said, navigation, criminology, and marine biology, etc. So this is very important. And firstly, in the 10th standard, you have it's a 12 marks, so it's a huge unit. The T ratios. The first thing is the T ratios. What the T ratio? It's a trigonometric ratios. In this right angle, trigonometric ratios are the ratios between the edges of the right angle triangle. These ratios are given by the following trigonometric functions of the angle known as the theta. Or as may you can say that angle A, angle B or angle C. But in a right angle triangle, if the triangle is given at right angle at angle B, so you can't take it as at angle B as a theta, okay, because it's a 90 degree and we just consider our theta as at acute angles.
So it is for in triangle ABC where angle B is equals to 90 degrees. So we consider our theta at angle A or either angle C. Okay. Move further, sine. The trigonometric functions. We are considering trigonometric function. First is sine functions defined as the ratios of the side opposite to the angle to the hypotenuse. Cosine function defined as the ratio of the adjacent leg of the triangle joining the angle to the right angle to the hypotenuse. Tangent function defined as the ratio of the opposite leg to the adjacent leg. So this is the basic three. So this is the basic three main trigonometric functions, whereas we can move further. If we consider this figure, that means in the triangle ABC, I am choosing this theta as you can say at angle A or angle C or as any make P, Q, R, D, E, F, anything. But if the angle lies is here as theta, that means we call it as reference angle. Here the reference angle is the theta. So the sine theta is opposite side divided by hypotenuse. We are not considering as a perpendicular or base because जैसे ही थीटा चेंज होता है, जैसे कि थीटा की प्लेस चेंज होती है, ऐसे उसका हाइपोटेनस तो वही रहता है, लेकिन ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड एज पर द एंगल हम कौन सा रेफरेंस एंगल चूज कर रहे हैं, एज पर द एंगल ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाती है. सो अगर मैंने यहाँ पे थीटा रेफरेंस एंगल जो मेरा थीटा लिया है ये वाले एंगल पे लिया है, तो उसकी ऑपोजिट साइड रेड वाली आपको जो दिख रही है और एडजेसेंट यानी कि उसकी साइड वाली साइड जो ग्रीन वन है वो आपको दिख रही है. तब हमारा साइन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस. cos थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस. tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपो बाय एडजेसेंट साइड. We can call it as abbreviation में sin theta is equals to oppo by hypo, cos is adjacent by hypo, tan is oppo by adjacent. Cosec theta, the fourth, fifth and sixth, these are the fourth T ratio. Cosec theta is a hypo by oppo. Sec theta is equals to hypo by adjacent and cot theta is equals to adjacent by oppo. Okay. इन दोनों टी रेशियोज के बीच में मैंने एक हल्का सा एरो बनाया हुआ है. क्यों बनाया है? आप लोग को दिख रहा होगा कि इट्स अ साइन दैट मींस ऑपो बाय हाइपो और कॉसेक जो है वो हाइपो बाय ऑपो है. सो यस गाइस, यू आर करेक्ट आइडेंटिटीज. सो साइन की होती है कॉसेक, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू यू कैन से दैट 1 अपॉन कॉसेक थीटा. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा. टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा. And cosec theta is equals to 1 upon sin theta. Sec theta is equals to 1 upon cos theta. And cot theta is 1 upon tan theta. So these all are the reciprocal identities. The reciprocal of the sine, cosine and tangent functions are named the cosecant, secant and cotangent respectively. The cosine, cotangent and cosecant are named because they are respectively the sine, tangent and secant of the complementary angle, abbreviated to co. Last, the quotient identities. In this T ratios, this is the quotient identities. As you can say that the tan theta is the oppo by hypo. That means is basically sin theta, that means oppo by hypo, and cos theta is the adjacent by hypo. So hypo cut and we have the oppo by adjacent. Tan theta is equals to oppo by adjacent. So finally tan theta is equals to sin theta upon cos theta. And we know already cot theta is the reciprocal of the tan theta. Therefore cot theta is cos theta by sin theta. So this is all about the T ratios. Now part of the trigonometry, the values of the T ratios for some specific angles. It lies between the 0 to 90 degree. So जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा हाथ में ही पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज जो डिग्रीज हैं उसकी वैल्यूज है. Considering from the little finger to the thumb, the yellow numbers indicate the sine function and the red number indicates the cos function. You just put the little finger as starting from the little finger 0 उसको रखो, next 1, next 2, 3 और 4 नंबर दो. तो साइन फंक्शन की वैल्यूज कैसे आती है मैं वो आपको बता देती हूँ. साइन x जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है साइन x इज इक्वल्स टू रूट n बाई 2.
दैट मीन्स रूट n में जो वैल्यू रखनी है वो जो 0 नंबर्स 0 1 2 3 ब्लू से जो इंडिकेट किए हुए हैं आप वो रखते जाओ। तो हमारी जो लिटिल फिंगर है उसमें मैंने 0 रखा है, ठीक है। तो 0 बाय रूट 0 आई मेंशन रिपीट रूट n बाय 2, तो रूट 0 बाय 2 साइन x इज इक्वल्स टू रूट 0 बाय 2, सो इट्स नथिंग, इट्स अ 0। तो साइन 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू है 0। 30 डिग्री पे 1 लिखा है हमने, रूट 1 बाय 2, तो इट्स अ सिंपली रूट 1 का 1 ही होता है, तो 1 बाय 2, सो साइन 30 डिग्री पे वैल्यू हुई 1 बाय 2। सेकेंड फिंगर पे, थर्ड फिंगर पे हमने रखा है 2, तो इट्स अ रूट 2 साइन 45 डिग्री पे आएगा रूट 2 बाय 2। तो नीचे का जो डिनोमिनेटर में 2 है वो उसके एक्सपांड अगर हम करें तो इट्स रूट 2 इंटू रूट 2, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से रूट 2 एक कट हो जाएगा, सो वी हैव फाइनली 1 अपॉन रूट 2। तो साइन 45 डिग्री पे 1 अपॉन रूट 2। सेम है 60 डिग्री पे 3 नंबर है हमारा वहां पे, तो साइन 60 डिग्री रूट 3 बाय 2। ओके, रूट हमें रखना है और नीचे तो 2 है। लास्ट साइन 90 डिग्री पे 4 हमने रखा है, तो रूट 4 बाय 2, तो रूट 4 का हो जाएगा 2, 2 बाय 2 कट, तो साइन 90 डिग्री पे वैल्यू आती है 1, 2 2 कट हो गया तो आ जाएगी वैल्यू 1। सेम एज आप लोग को मैंने जो रेड नंबर्स इंडिकेट हो रहे हैं वो हमारे कॉस हैं। तो ऐसे अगर आप याद रखोगे, आपका हाथ हमेशा आपके पास है और आपको सिर्फ सिंपली जब आप हाथ अपना जो है वो स्ट्रेट रखोगे तो आपको आप एज्यूम कर पाओगे, आपको दिखेगा कि जो हमारी फिंगर्स है वो एग्जैक्टली फर्स्ट जो लिटिल फिंगर है वो 0 डिग्री पे लाई करती है और जो थंब है वो हम परपेंडिकुलर देख सकते हैं। थंब और लिटिल फिंगर के बीच में 90 डिग्री है एग्जैक्टली, तो 0 डिग्री लास्ट फिंगर जो लिटिल फिंगर है वो 0 डिग्री पे, फिर उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45, उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में जो है 90 डिग्री। तो आपको ऐसे कभी डिग्रीज भी याद नहीं रखनी पड़ेगी और सिंपली नंबर्स जो इंडिकेट किए हुए हैं 0 1 2 3 4, और कॉस के लिए उल्टा रिवर्स करना है आप लोग को 0 1 2 3 4, थंबकिन से आपको स्टार्ट करना है 0 1 2 3 4। सो इट इज एज सिंपल एज दिस गाइस for the t ratios as we see here। so mainly आपको दो ही याद रखने हैं एक्चुअली, साइन और कॉस का, 0 to 90 डिग्री से। फिर tan थीटा आपको पता है कि इट्स tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस। तो जो फर्स्ट 2 रोज हैं उसका आपको डिवीजन करना है सिंपली, जैसे कि tan थीटा 0 डिग्री के आगे हम ले तो sin थीटा 0 है और cos थीटा 1 है, तो 0 बाय 1 इट्स 0, तो सिंपली 0। सेम ऐसे 0 to 90 डिग्री है। ओके, लास्ट में आपको दिख रहा है 10 90 डिग्री पे आपको दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट है वो, ठीक है, अनडिफाइंड बोल सकते हैं या इनफाइनाइट बोल सकते हैं, बिकॉज tan थीटा अगेन आपको पता है साइन बाय कॉस, तो 90 डिग्री पे 1 बाय 0 ले रहे हैं, साइन की वैल्यू 1 है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 है, तो 1 बाय 0 डिनोमिनेटर में 0 है गाइस, तो इट्स अ अनडिफाइंड फंक्शन। तो जहां पे भी आपको अनडिफाइंड फंक्शन दिख रहा है वहां सब जगह डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट्स व्हाई वी पुट अनडिफाइंड फंक्शन। The basic trigonometric identities, this is the all three, mainly three basic trigonometric identities here, बट उसका रिवर्स ऑर्डर और सब कुछ आपको आना चाहिए। दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो नोन एज द पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बिकॉज वी कैन प्रूव दिस आइडेंटिटीज बाय द पाइथागोरस थ्योरम। सो फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड tan square theta plus 1 is equals to sec square theta, and third cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta. So this is the main three important trigonometric identities guys, but इनके जो रिवर्स ऑर्डर है यानी कि उल्टा सीधा आपको सब कुछ आना चाहिए, नहीं तो सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी आती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो उससे आप चैप्टर्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको भी ये भी आना चाहिए कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या cos को इधर रख के sin उधर भेजो तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ऐसे करते करते आप सेकेंड की जो आइडेंटिटी है उसमें से भी दो मोर फॉर्मूलाज बना सकते हो। थर्ड वाला जो है कॉट स्क्वायर थीटा, उसमें से भी आप बना सकते हो, और कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा में से भी आप 2 बना सकते हो। तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 नहीं है, वैसे तो हम और बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, yes it's a square root of 1 minus cos square theta, sin
थीटा बाई 2 इज व्हाट? तो यस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऐसे तो हम कितनी आइडेंटिटीज बना सकते हैं, लेकिन मेन जो बेसिक 3 आइडेंटिटीज है, अगर आप उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओगे तभी आप अपना ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिग्नोमेट्री। Please subscribe the channel for the latest video of the all standards 6 to 10 CBGB. Please like and share it. Thank you. See you in the next video.